Is matter around us pure? This is the name of the second chapter of Science of class 9th. And here in this video we are going to learn some important terms of this chapter. Pure and impure substances. Which substances are called pure substances and which substances are called impure substances? Let's try to understand. A substance which contains particles of only one kind is called a pure substance, whereas a substance which contains particles of different kinds is called an impure substance or mixture. एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हों उस सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स या ये कहो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद हों तो उस सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. इम्प्योर सब्सटेंस टू या मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. एग्जाम्पल्स प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में आप शुगर को ले सकते हो, सॉल्ट को ले सकते हो. ऑल एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, all compounds are also pure substances. And the example of impure substances are mixtures. Soil is also impure substance. Now try to understand the term matter. Matter, what is matter? Anything which occupies a space and has mass is called matter. Anything which occupies a space and has mass is called matter. Matter can be classified in two ways. First, on the basis of its physical properties, and second, on the basis of its chemical properties. On the basis of its physical properties, matters are classified in solids, liquids and gases. On the basis of its chemical properties, matter are classified in three parts: elements, compounds and mixtures. Remember, all the matter around us is not pure. All the matter around us is not pure. The matter around us is of two types, whether they are pure substances or they are mixtures, and mixtures are known as impure substances. Pure substances. A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. These particles may be atoms or molecules. Here the term particles means atoms or molecules. Hence we can say that a pure substance is one which is made up of only one kind of atoms or only one kind of molecules. All elements and compounds are pure substances because they contain only one kind of particles. Some examples of elements are hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, carbon, iron, copper, silver, gold. These are the examples of elements. And some examples of compounds are water, sugar, sodium chloride, carbon dioxide, copper sulfate, calcium oxide, etc. Here the formula of water is H2O, formula of sugar is C12H22O11, formula of sodium chloride is NaCl, formula of carbon dioxide is CO2, formula of copper sulfate is CuSO4, and formula of calcium oxide is CaO. Now try to understand important properties of pure substances. All pure substances are homogeneous throughout its mass. A pure substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. A pure substance has a fixed composition. A pure substance has a fixed melting and boiling points. Here we see that all pure substances are homogeneous throughout its mass. This is the property of pure substances. So what is the meaning of homogeneous? The meaning of homogeneous is made up of parts that are all the same type. Homogeneous means anything which is made up of the parts that are all same type.
सेम टाइप के पार्ट्स से मिलकर अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो हम उस चीज़ को होमोजीनियस कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंसेस की है वो ये है कि ऑल प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजीनियस थ्रू आउट दिस मास। यानी प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम टाइप के पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, सेम टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। A pure substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते किसी अदर सब्सटेंस में। A pure substance has a fixed composition। प्योर सब्सटेंस अगर कोई कंपाउंड है तो वो कंपाउंड एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिलकर बना होगा। कैसे? यहाँ पे वाटर एग्जाम्पल के रूप में एक कंपाउंड है और वाटर का फॉर्मूला है H2O। इट मीन्स वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O होता है। H2O इंडिकेट्स दैट इट इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का वन मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं, तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस की एक और खासियत होती है कि प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सब्सटेंसेस की एक और खासियत होती है कि प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस। All mixtures are impure substances because they contain more than one kinds of particles. All mixtures are impure substances. Why? Because they contain more than one kind of particles. A mixture contains two or more pure substances mixed together. Mixtures में two या two से अधिक pure substances होते हैं जो आपस में mixed होते हैं। Examples of mixtures are milk. Milk is the example of mixture because in milk water, fat and proteins are mixed. Salt solution is a mixture. Sugar solution is the example of mixture. Soft drinks are mixtures. Sea water is also mixture. These are some examples of mixtures. Now important properties of mixtures. Mixtures की important properties क्या होती हैं? Mixtures may be homogeneous और heterogeneous। मिक्सचर्स यहाँ पे होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अगर मिक्सचर होमोजीनियस है इसका मतलब टू सब्सटेंसेस या मोर देन टू सब्सटेंसेस इतनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं कि वो पूरा सब्सटेंस एक जैसा प्रतीत होता है। ये होमोजीनियस का मतलब होता है। और अगर मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो इसका मतलब है टू या मोर सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं बट फिर भी मिक्स होने के बाद भी वो सेपरेट सेपरेट आराम से नज़र आ रहे हैं, वो नज़र दिखाई दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए वाटर में आप कंकड़ मिक्स कर दीजिए या रेत सैंड को मिक्स कर दीजिए तो इस टाइप का जो मिक्सचर होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इम्प्योर सब्सटेंसेस की कि अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका अर्थ है कि जब भी मिक्सचर कंबाइन होता है तो वो मिक्सचर एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन नहीं होता है। अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स्ड नहीं होते। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटीज़ आपस में मिक्स की है। उन क्वांटिटीज़ पे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस, होमोजीनियस मिक्सचर्स एक प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, तो इन होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड। होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस में सब्सटेंसेस पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट और वन फेज। मिक्सचर पूरा एक
स्टेट में प्रतीत होता है या एक फेज में प्रतीत होता है। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और सस्पेंशंस और कोलाइड्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनमें सस्पेंशंस और कोलाइड्स आते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलो या सस्पेंशंस कह दो या कोलाइड्स बोलो, उसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस सेपरेट होते हैं, सेपरेट दिखाई देते हैं। जो भी सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं वो अलग अलग नज़र आते हैं। सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स कम्प्लीटली, जो सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, here we take some examples of homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Some examples of homogeneous mixtures are air and most alloys are the examples of homogeneous mixtures. Now the examples of heterogeneous mixtures are sand, oil and water, concrete, etc. These are the examples of heterogeneous mixtures. Other things will be defined in next video, so don't forget to watch next video because next video is going to be more informative. And if you have not subscribed the channel AI Study Circle, then subscribe the channel AI Study Circle also. And for mathematics, subscribe Maths He Maths. Thank you. Thanks a lot for watching this video.